ਤਾਂ आरबीआई ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.50% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 6.0 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.5 जो है रेपो रेट हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती बरकरार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे वल्लों साफ तौर पर कहना है तो रेपो रेट दे विच कटौती की गई है। 0.50% कटौती की गई है। पहला ये रेट 6 सी, हुण घटा के 5.5 कर दिता गया है। of a maturing market where foreign investors can enter and exit smoothly, and at the same time higher gross FDI, which is again a sign of our large industrial and other companies going out and investing. So on the whole, gross FDI is high, which indicates that India continues to be a good and attractive investment destination. External commercial borrowings and non-resident deposits, on the other hand, witnessed higher net inflows compared to the previous year, as on May 30, 2025, India's foreign exchange reserves stood at $691.5 billion US. These are sufficient to fund more than 11 months of goods imports and about 96% of external debt outstanding. Overall, India's external sector remains resilient as key external sector vulnerability indicators continue to improve. We remain confident of meeting our external financing requirements. Now I come to liquidity and financial market conditions. You are all aware that ਤਾਂ आरबीआई ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.50% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 6.0 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.5 जो है रेपो रेट हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती बरकरार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे वल्लों साफ तौर पर कहना है तो रेपो रेट दे विच कटौती की गई है। 0.50% कटौती की गई है। पहला ये रेट 6 सी, हुण घटा के 5.5 कर दिता गया है। of a maturing market where foreign investors can enter and exit smoothly, and at the same time higher gross FDI, which is again a sign of our large industrial and other companies going out and investing. So on the whole, gross FDI is high, which indicates that India continues to be a good and attractive investment destination. External commercial borrowings and non-resident deposits, on the other hand, witnessed higher net inflows compared to the previous year, as on May 30, 2025, India's foreign exchange reserves stood at $691.5 billion US. These are sufficient to fund more than 11 months of goods imports and about 96% of external debt outstanding. Overall, India's external sector remains resilient as key external sector vulnerability indicators continue to improve. We remain confident of meeting our external financing requirements. Now I come to liquidity and financial market conditions. You are all aware that किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 73504 73504